सज्जन सभ्य आज आपण या आनंद सोहळ्यासाठी आम्ही सर्व भावंडांतर्फे अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करण्यासाठी तुला हार्दिक शुभेच्छा. तुझे हार्दिक अभिष्ट चिंतन. जीवेत शरदहा शतम नंदात शरदहा शतम. तुझ्या लेकी सुनेने आयोजित केलेल्या ह्या सोहळ्याला उपस्थित राहताना मला आठवतोय तो आमचा बंडू दादा. आमच्या त्या वयातला तो हिरो, ऍक्च्युअली आयडॉल. कारण ज्याला भीती ठाऊकच नव्हती असा जबरदस्त धडाडीचा, निडड्या छातीचा, हुशार आणि ताकदवान असा आमचा बंडू दादा, ज्याने आम्हाला धीट बनवलं, मानसिक आधार दिला. त्याच्या त्या बेबी, ट्रॅप, बंगाली अशा नावाने आम्हाला अजूनही हाताळणारा असा आमचा बंडू दादा आता हा अमृत वर्षकालात पदार्पण करतोय. आणि त्याच्याबरोबर आम्ही सर्वजण हा आनंद सोहळा साजरा करण्याकरता सहभागी होतोय. हा आम्हा सगळ्या भावंडांसाठी, फडके कुटुंबियांसाठी अमृत कांचन योगच होय. वैदिक धारणेनुसार ज्याचं आयुष्य प्रभावशाली असतं आणि जे इतरे जणांना मार्गप्रदीप ठरतं त्यालाच आयुष्यमान असं म्हणतात. संगीताच्या मैफलीसारखंच आहे. त्या मैफलीत जसं संवादिनीच्या खुंट्या पिरगाळून, तानपुऱ्याच्या तारा पिळून, डग्गा आणि तबल्याला ठाकून ठोकून तालात सुरात आणून मैफल रंगवली फुलवली जाते, तसंच आपलं आयुष्यही आहे. आपल्या आयुष्यातही आपण भले बुरे अनुभव, कष्ट, संकट इत्यादींशी सामना करत करत आपण आपल्या कुटुंबातल्या व्यक्ती गणगोत गोतावळ्यासाठी आपलं आयुष्य फुलवत आणि फुलवत असतो. तुझ्या त्या सतार वादनासारखे समेवर येण्यासाठी केलेली साधना ही तुझी संसाररूपी मैफिल सजवण्यासाठी तुझ्या बरोबरीने सप्तपदीची जबाबदारी नाती चरामी अगदी तन्मन अर्पून पेलणारी, नेहमीच तुला साथ देणारी आमची उषा वहिनी. तुला लाभली हा दुग्ध शर्करा योग. थोरात थोर आणि लहानात लहान ही होण्याची ही दुर्मिळ वृत्ती तुझ्यात आहे. म्हणूनच मामा, काका, आजोबा इत्यादी उपाध्या तुला शोभूनच दिसतात. परिस्थितीवर मान ठोकून, अडथळे दूर सारून तू झालास इंजिनियर आणि स्वकर्तृत्व बळावर ओढून आणलं सुख समृद्धीला आपल्या सुबत्तेला तुझ्या समोर. मराठी माणूस उद्योगधंदा करू शकत नाही म्हणणाऱ्यांना दिलेली ही सणसणीत चपराक आणि त्यांना ही चपराक देतच उभा केला भारत स्विचगेअरचा चढता आलेखाचा उद्योग. कार्यमग्न करायला लावणं म्हणजेच वितरण करणं. म्हणूनच हे वितरण पर्व महत्वाचं. आज या आनंद सोहळ्याला आपण सर्वजण इथे जमलो आहोत ते बंडूदादाला हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी. कमळ फुलांनी बहरला हा सरोज कमलाकर. कमळ फुलांनी बहरला हा सरोज कमलाकर. सुख समृद्धीचा लक्ष्मी हस्त आहो सदैव शिर कमलावर. बंडू दादा तुम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो 50,000. आम्हा सर्व भावंडांकडनं परत एकदा हॅपी बर्थडे. जीवेत शरदहा शतम. All past 75, so we can hear more speeches like this again. Thank you very much, Vargatya, and all the Atyas together. They have been a great support to all of us since the last 45-47 years when we were there. Okay. Now let's go on to his friends who were there right from Bharat Switchgear, Now Bharat Times, Vasai, all the jobs and the factories which we had. Okay. They were a very supportive group, and let me give you an example. I did not know any of them. I had the names which were emailed by my daddy, and I just called them up and I said कि मैं फडक्यांची मुलगी बोलतीये. Okay. And then I wanted to say, you know, की कुठच्या ग्रुप मधले आहात तुम्ही, की विजिट आहे शाळेतले का ऑफिसातले. One person made a very big this thing की तुम्ही 75 का साजरी करताय, तुम्ही 61 साजरं करायला पाहिजे. I said okay fine, तुम्ही 61 समजून घ्या आणि मग नाचा. तर ते म्हणे ओके वी विल हॅव अ जेरियाट्रिक डान्स, कारण आम्ही सगळे 75 ओलांडलेलो आहोत. अँड दॅट वॉज युअर सोनी फ्रेंड हु आर कॉल्ड अप अँड हु आर कम टुडे. नाउ विंची अंकल वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस अ फ्यू वर्ड्स ऑन ऑल ऑफ देअर बिहाफ.
With your kind permission, I will read out my feelings instead of speaking. Respected Phadke family members, relatives and friends. First of all, I convey my heartiest congratulations to Sri Kamlakar Janardhan Phadke on the occasion of completion of 75 years of his life, which is a remarkable landmark in anybody's life. I wish him another 25 years of very healthy and happy life. Another 25 years. You have to complete the century. You can't escape. On this occasion, I also congratulate Srimati Sarojben Phadke, who stood by him solidly in thick and thin throughout their married life. Throughout, she showed a great wisdom, love and affection to the entire family and conducted the family affairs in such an ideal way that I personally rate this being an excellent couple, I also congratulate and appreciate Sri Phadke's family, that is Dr. Jayashree and Dr. Sanjay Pandya, Dr. Asha and Sri Niranjan Gokhale and Geeta Phadke for arranging this marvelous evening. This shows their true love, respect and affection toward their parents, which deserves a great appreciation. That deserves a great applause. If you want to describe Mr. Kamlakar Phadke in one sentence, that would be a learned son of a learned father. A learned son of a learned father with excellent family which we observe here today, excellent family. I remember Mr. Phadke's father's function was arranged somewhere in Dadar, and it was really, still I remember, so many years back that happened. My association with Mr. Phadke is since 1963, the year in which Jayashree was born. Thus, our business and family association is almost half a century old. This itself is a remarkable feat and rare phenomenon actually. See, even in between the brothers, this sort of business association, you will rarely find that it lasts for 40, 50 years, This itself is I am very proud to announce that still we have that association and we continue it. This relationship was naturally based on mutual respect and trust. This is very important because a lot of money matters is involved, lot of emotional aspects are involved. Still, we continue, which today I feel a sense of pride, a unique achievement. It's a unique achievement that we still continue. We still have a small business together, although we are retired. During my association in business with Mr. Phadke, I found in him a very positive, optimistic and courageous person. हो जाएगा, तू फिकर मत कर. That is his word. You don't worry, everything will be fine. He throughout remained a very hardworking and dedicated to his profession. At the same time, he is very kind and always helpful for others. Anybody, कोई पण आवे, तो के I am here, don't worry, you go ahead. This is the way he lived his life, professional life. Our business associates, like our customer friends, suppliers, staff and labor, always consider him an able engineer and a very distinguished and noble person. So still they remember, some of them are here,
they will confirm actually. And finally, this is all my feeling. I'm overwhelmed to witness this function among, and I have the privilege to be part of your family, you know. And finally, once again, on behalf of my wife Randa Devi Vinci and myself, our associates Srimati Vanita Ben and Arvind Bhai Kapasi, and Srimati Uma Ben and Rashesh Nanavati wish Mr. Phadke a very, very happy and healthy years to come. Thank you very much for patient hearing. Thank you, Vinci uncle, Devi uncle, Arvind uncle, and all of you for this beautiful speech. I guess these were only two formal speeches because I had told them that you have to speak something, okay? Now we can have any informal speeches, emotions, whatever you want to. I have got a very senior person with me who is the father-in-law of my sister-in-law, who has already passed 80 years and is like scoring high in the sky, okay? Okay, if he is not offended, can he come and speak a few words over here? You know who I mean now. हम इधर इकट्ठे हुए हैं श्री फडके का 75th ईयर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। जयश्री ने मुझे वो फंक्शन के लिए इनवाइट किया। उसने वो बोली कि आपको 2 मिनट बोलना पड़ेगा। तो अभी बेटी बहू को तो कोई ना नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैं 2 मिनट, उसने 2 मिनट 2 शब्द कहे हैं तो वो मैं बोलता हूँ। जयश्री का पहचान कभी हुआ, मिस्टर फडके का पहचान कभी हुआ। मिस्टर फडके की लड़की जयश्री, मिस्टीवियस लड़की जयश्री, संजय जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का का जीवन में एनक्रोच हो गई, घुस गई। चलो तब से मैं मिस्टर फडके को जानता हूं। मिस्टर फडके को बहुत क्लोजली नहीं पहचानता हूं, दूर से पहचानता हूं। इसलिए दूर से जो कुछ ऑब्जर्व किया वो 2-3 बातें मैं करूंगा। सबसे पहले क्या देखा, मिस्टर फडके मुझे बहुत पायस और रिलीजियस आदमी लगे। ऐसा नहीं है कि वो हर रोज टेम्पल में जाते हैं, लेकिन उसका जो संस्कृत का नॉलेज है, जो पुराना वेदास का नॉलेज है, इसके लिए मैं उसको पवित्र आदमी बोलता हूँ। वो तो छोटी चीज हुई, बट उसने उसका ग्रैंडसन केदार को 4 साल की उम्र से ऐसा सिखाया कि वो लड़का, आप बोलो कि वो श्लोक गीता का फलाना चैप्टर का श्लोक बोलो तो वो बोलेगा, आपको इम्प्रेस कर जाएगा। वो सभी ट्रेनिंग श्री ग्रैंडफादर की है। वो सिवाय जो केदार का जो डेवलपमेंट हुआ है, आज केदार को हम आईआईटी में बहुत ब्रिलियंट लड़का तरीके से देखते हैं, वो सभी आया है उसका ग्रैंडफादर का थोड़ा ट्रेनिंग से। माँ बाप ने तो ट्रेनिंग दिया है। अभी तो वो एक चीज हुई। दूसरी चीज जो मैंने श्री फडके जी में ऑब्जर्व की है, वो बड़ा लाइव जीवंत टूरिस्ट है। हम लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं, देखते हैं, बड़ी बड़ी बातों करके बोस्टिंग करते हैं कि वो देखा और भूल जाते हैं। फडके की चीज अलग है। वो जो साइट सीइंग में जाते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट देखते हैं, उसके बारे में लंबा लेक्चर दे सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, इतना वो रस लेते हैं। दूसरी चीज मैंने वो देखी श्री फडके जी में, वो है, मालूम नहीं है उसको कितना पटेल से एसोसिएशन हुए हैं, बट लगता है कि वो पटेल से ज्यादा घूमे हैं। पटेल लोग से उसको स्ट्रेंथ मिला, स्ट्रॉन्ग आदमी बन गए।
और